Good morning, everyone. We'll start with the derivative and technical updates. First, on the technical front, yesterday Nifty open and high level is almost same, but after that Nifty traded within a range and closed almost flat level. So now for coming session, index may trade in the range of 18,000 and 18,500 levels. So on like any decisive breakout above 18,600 or breakdown from either side will trigger the directional trend. So on the monthly chart and weekly chart, if we see, so Nifty looking still positive. So any decline should be viewed as a buying opportunity. So today monthly expiry is there, so we may see a volatile move. So cautious view for the day. And if you see on the sectorial front, yesterday PSU bank continue leader, and like oil gas sector, metal and IT stock witnesses slightly selling pressure, which close in the red. So now for the Nifty, 18,000 will act as an immediate support zone and 18,600 will act as a resistance. On the Bank Nifty front, Bank Nifty yesterday opened a gap up and around 15 points. So after that, the Bank Nifty most part of the day is traded in the positive zone and closed with a gain of 0.64%. Last few sessions, Bank Nifty continue outperform compared to Nifty. So yesterday, PSU Bank witnessed a buying, especially Bank of Baroda and Canara Bank. Bank Nifty hit yesterday all-time high level of 42,816 levels. So if you see on the daily chart, Bank Nifty form a slightly doji candlestick pattern. So bias for the index is still positive. Now recent gap area, which is on 11th November, will act as the immediate support zone. So that gap level is 41,900 level is a support level, and while on the higher side 44,000 will act as a resistance zone for the Bank Nifty. So any small correction should be viewed to add a stock specific long trades. Now on the derivative front, yesterday Nifty futures add a new long position of around 4.94%, addition of 6.6 lakh shares. TCR saw a decline from 0.99 to 0.92 levels. Major addition seen at 18,300 call by 14.42 million shares and 18,400 call by 11.60 million shares. While on the put option front in the Nifty, 18,000 put by 95 million shares and 18,200 put by 78.68 million shares. Yesterday, Bank Nifty witnessed a short covering of around minus 0.12%, slightly declined by the 4,100 shares. So, but in the Bank Nifty, PCR gained from 1.09 to 1.21 levels, adding the strength. So, major addition seen at 43,000 call by 35.01 million shares, and on the put option front, 42,500 put by 37.20 million shares. If we see on the long build-up side, Hindalco, Maruti and Sun Pharma seen as long build-up position, and short build-up is seen as Power Grid, Nestle and Wipro. On the FII data front, FII added the long contract by positive 2,835. Overall net long by positive 62,345 contracts. So net long short ratio is 66.92%. On the cash option front, FI sold 789 crore and DI bought 413.75 crore. On the report call front, in the technical report, one can buy a rallies in the range of 235 to 239. Stop loss is a 228 and target is a 265. So that's it from my end, ma'am. I will hand over to Archana ma'am for further research. Thank you and over to you, ma'am. Thank you, Kshitija. Good morning, team. So, a few updates from my side, starting with HG Infra Engineering. The company has received a letter from Adani Road Transport regarding the declaration of appointed date as November 3 by authority for project in Uttar Pradesh. The company will execute civil and associated works on engineering, procurement, construction basis for development of an access control 6-lane road project in the Uttar Pradesh on DBFOT basis under PPP. The project will be completed within 820 days from the appointed date. On Biocon, the company has entered a semi-exclusive partnership agreement with European pharmaceutical company Zentiva for the commercialization of its vertically integrated complex formulation for the treatment and management of type 2 diabetes and obesity.
The company has also issued commercial papers worth rupees 2,250 crores on private placement basis at a coupon rate of 7.75%. On Tamil Nadu Mercantile Bank, the bank has entered into corporate agency agreement with Cholamandalam MS General Insurance Company and Max Life Insurance Company for marketing, distribution, and selling life and general insurance products. So that is a positive development on the company's front and could be taken positively. On Reliance Industries, Reliance Jio, the telecom arm of the company, launched 5G services in Pune. On Adani Enterprises, Adani Power and Tata Power, the Supreme Court has upheld the appeal order on rupees 7,000 crore transmission contract awarded by MERC to Adani Electricity Mumbai Infra. The Tata Power has challenged this order in April 2021. So this is a negative development on Adani Power, and stock may react negatively. On ITC Hotels, ITC Hotels on Wednesday said that it has partnered with Jolly Hospitality for 116-room hotel in Belgavi. Hotel is spread over more than 5 acres, currently under construction, and is expected to get completed by 2024. Pretty positive for ITC's hospitality space, and we have hold rating on the stock with a target price of 380. On KPIT Tech, the company has announced that it has been selected by the Renault Group as its software scaling partner. KPIT will deploy 600 engineers globally to develop a software-defined vehicle technology platform, which will help Renault with its electric vehicle production program that will start in 2026. So this is positive development on KPIT, though we don't have a formal coverage on the stock. And lastly, on the railway stocks, so the Ministry of Railways, as part of its energy corridor, is likely to sanction multiple projects worth rupees 94,000 crore. This plan includes new railway lines from ports to coal mines, as well as between the different ports. Also, railway projects approvals have been fivefold till date compared to on a YY basis. These projects will lead to order inflow for the rail companies and would also lead to growth momentum. This bodes well for the all rail stocks. We currently have buy rating on RITES, RVNL, and IRCON. So that's it from my side. Now I request Brijesh to take it from here. Thank you, over to you, Brijesh. Good morning, everyone. So, a few more news updates from my end. So, there is a news in the telecom service provider that the gross revenue has grown by 17.91% from year on year, which is rupees 60,530 crores as per the April to June 22 data. With this revenue growth, Jio is the one which is leading the show. So as we compare the previous year data, the growth was 51,335, and currently for the April it is 60,530 crores. So the telecom sector is something which can be in focus. Next is on State Bank of India. So State Bank of India said that the credit growth they are expecting a good credit growth. This would be mainly because they are going to keep their non-performing NPS below the 1% ratio. So this update has come yesterday. So overall, the June to September this quarter, the bank has said that their expected credit growth can be 14 to 16% for the current financial year. So and they will take major steps to attract their deposits. So that would be a positive news for the SBI. Next is on sugar companies. The Sugar Mill Association on Wednesday said that India is likely to extend the limit of sugar exports by 2 to 4 million tons in 22-23 season. This move will leave the total exports at 8 to 10 millions below as compared to the last year. If you see, India is the world largest sugar producer after Brazil. So overall, the export which came from the India was 11 million tons in the month of October to September during the season year 21-22. Now, next is on this exchange. On Wednesday, the exchanges said that all the stocks on which derivative contracts are available will be traded to T+1 trade cycle from the January 23. So T+1 will be seen from the January 23. And then lastly, this domestic tax collection data. This budget
this will exceed the budget estimation by 4 lakh crores in the current physical. It's expected to exceed 4 lakh crores mainly because of the higher income tax, custom duty, and GST collections. This data has been said yesterday. Like we got this data yesterday. So that's all from my end. I'll hand over Prabhakar sir for the more news updates. Good morning, team. S&P has said that India GDP growth may average 6.3% from 2021 to 2030. And if that happens, then India will become third largest economy, head of Japan and Germany. So, already we have overtaken UK. So very soon we will overtake Japan and Germany is what S&P is saying. Adani Group is looking for fundraising for $5 billion. Yesterday, the news was only for Adani Enterprises, but now it will be for other group companies also. So Adani Enterprises would be the first to raise fund. So already the stocks have reached sky high, and and at this valuation, even a small dilution can get them this money. So I think this is positive for Adani Group, but due to many reasons, we don't track this group stocks. The Fed meeting, which was held on November 1st and 2nd, the minutes suggested that slowing pace of rate hike, signaling the central bank was leaning towards downshifting to a 50 basis point hike in December. This is very positive for global market. Everybody was expecting very aggressive rate hike from Fed. If the rate hike comes down, that is very positive for global markets. I think Indian market would start to outperform. Today we have our derivative settlement. Maybe after this derivative settlement, market might look very good. There is one PNB Paribas report which says that Indian IT industry market share has been highest in last 5 years. The global market share of IT industry, India commands almost 35%. This is very positive for IT sector. I think going forward also, India would do very good in IT sector. Tata Consumer will acquire Bisleri for 7,000 crores. So I don't think immediate any positive for Tata Consumer will happen. There is one more article, which has come in today's Business Standard. Aether Energy inaugurated its second manufacturing facility in Wednesday in Hosur, spread across 3,000 square feet and capacity to produce 4,20,000 units in a year from current 1,20,000 units. And these people, they studied in IIT Madras, and then they started in 2012, and they have come long way. Now this is likely to compete with Ola and other two-wheeler EV is what I'm collecting data. Tax collection, which Brijesh said, the total tax revenue which was budgeted was 27,50,000 crores. Direct tax collection, Revenue Secretary says it will become 17,50,000 crores, and indirect tax collection, which is GST and custom duty, which will be 14 lakh crores, and total will end up at 31.50 lakh crores. So that is where the 4 lakh crores incremental will come. That is Tarun Bajaj, the Revenue Secretary, has said yesterday, which is very positive. If we have higher tax collection, this budget will be the budget before election. We have normal budget before election. Next year budget will be a budget, election budget. So many reformist thing will not be taken up. So we expect many things to come in railway and infrastructure. So that is why railway stocks have been rallying, even capital goods. I think even infra stocks, construction stocks will start to move higher. In a news, Concor, the railways as a part of its ambitious energy corridor program, is likely to make coal connectivity project connectivity possible
at 94,153. It is again positive for railways. And Brigade has said, the pre-sales, in the next half, totaling the whole year would be about 3,500 to 4,000 crores, which is very good. So, and liquor prices have been increased, due to general sales tax in Kerala, which will not have any impact of Indian-made foreign liquor. With that, over to you, Hitendra. Yeah, thank you, sir. Good morning, everyone. हम इस कॉल को एक बार हिंदी में कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं। S&P ने जो कहा है कि हमारी जो GDP अगर हम अगले 2021 से 2030 तक 6.3% से ग्रो कर दें तो इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी, जो कि जापान और जर्मनी के आगे चली जाएगी। करेंटली हम यूके के आगे, तो ये बहुत ही पॉजिटिव है और ओवरऑल सेंटिमेंटली अच्छा रहेगा इंडियन मार्केट्स के लिए। सेकेंड हम देखेंगे अडानी ग्रुप ने कहा था, जैसे कल जो न्यूज थी वो अडानी एंटरप्राइज लिमिटेड थी जो फंड रेज कर दी, बट अभी अडानी एज अ ग्रुप फुल फंड रेज कर रहा है जो कि $5 बिलियन है। सो ओवरऑल एक ये पॉजिटिव है अडानी ग्रुप स्टॉक से, बट हम इसे कई रीजनों की वजह से इसे ट्रैक नहीं करते हैं, सो इसके ऊपर कमेंट नहीं करेंगे। थर्ड, फेड की जो मीट थी वो नवंबर 1 और 2 की थी, और उससे से उन्होंने कहा कि जो उनके एनालिसिस में कहा कि जो पेस ऑफ रेट हाइक है वो उसको शिफ्ट कर देंगे और उससे थोड़ा स्लो डाउन करेंगे, क्योंकि थोड़े से ग्लोबली जो फैक्टर्स उन्हें पॉजिटिव दिख रहे हैं, तो इससे 50 बेसिस पॉइंट तक भी ला सकते हैं दिसंबर के रेट हाइक्स के लिए। सो ओवरऑल एक ये पॉजिटिव सेगमेंट रहेगा ग्लोबल मार्केट्स के लिए, और इंडिया देखिएगा तो यहाँ से और आगे आउट परफॉर्म कर सकता है। हम वैसे भी आउट परफॉर्म कर रहे हैं। BNB पारिवास ने कहा कि जो इंडियन IT कंपनीज का मार्केट शेयर है वो हाईएस्ट हो गया, अभी करंटली 30% है और वो कमांड कर रही है। सो ओवरऑल एक इंडियन IT सेगमेंट अच्छी स्ट्रेंथ पे है। बिस्लरी को टाटा कंज्यूमर एक्वायर करने वाली 7,000 करोड़ के आसपास का फिगर ये आया है, और देखा जाए तो इमीडिएटली कोई एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर नहीं रहेगा टाटा कंज्यूमर के स्टॉक्स पे। ईथर एनर्जी ने कहा कि उन्हें नई मैन्युफैक्चरिंग डेवलप की होसर में 3 लाख स्क्वायर फुट के आसपास रहेगी, तो ये कंपनी बेसिकली अभी करेगी ओला ओकिनावा जैसे EV कंपनीज को, और उनसे आगे निकलने के लिए ट्राई करेगी। बेसिकली IIT बॉम्बे और IIT के जो दोनों एंटरप्रेन्योर्स हैं। टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन में देखा जाए तो टोटल टैक्स रेवेन्यू अगर हम देखा जाए तो 27.5 लाख करोड़ था बजटेड, जो कि डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन देखा जाए तो 17.5 लाख का था, और इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन देखा जाए तो 14 लाख के आसपास का था। बट अभी इस बार टैक्स कलेक्शन देखा जाए तो 31,50,000 हो गए, 4 लाख करोड़ की ज्यादा का टैक्स कलेक्शन इंक्रीमेंटली देखा जा रहा है बजट, तो इससे ये बेनिफिशियरी हो सकता है कि हम थोड़ा स्पेंडिंग हमारी बढ़ा सकते हैं। रेलवेज इंफ्रा जैसे स्टॉक्स में भी हम देख रहे थोड़ा सा प्री बजट आ रहा है बिफोर इलेक्शन के पहले, और नेक्स्ट ईयर जो रहेगा वो बजट इलेक्शन रहेगा, सो वो एकदम बहुत परफॉर्मेंस न्यूज नहीं लेंगे, बट इस बार हमें लगता है थोड़ी से स्पेंडिंग हमारी कैपेसिटी बढ़ सकती है। सो हम देख रहे हैं रेलवेज इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे स्टॉक्स और डिफेंस जैसे स्टॉक्स में हमें थोड़ा बूम मिल रहा है। जो पॉजिटिव एनर्जी कॉरिडोर है उसके लिए con-call के लिए भी कनेक्टिविटी रहेगी, न्यूज बेटर रहेगी, जो कि 94,153 करोड़ के आसपास है। ब्रिगेड की अगर प्री सेल्स देखेंगे जो S2 में उन्होंने कहा 3,500 से 4,000 करोड़ के आसपास की रहेगी। TRAI का एक डेटा है देखा जो एवरेज एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू वो 17.9% के आसपास ग्रो हुआ ईयर ऑन बेसिस पे, जो कि 5,530 करोड़ का अप्रैल से जून क्वार्टर में। इसमें जियो जो है सबसे लीड कर रहा था, सेकेंडली और हाँ जो प्रोवाइडर देखा जाए तो पिछले अगर क्वार्टर में देखा जाए तो सेम यहाँ पे देखा जाए तो 51,335 करोड़ का है। SBI ने कहा है कि वे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सस्टेन करने की जो क्रेडिट ग्रोथ है और अपनी जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है NPA रेशियो को 1 के नीचे रखने के लिए नेक्स्ट जून से सितंबर क्वार्टर में जो उन्होंने कहा कि जो एक्सपेक्टेड क्रेडिट ग्रोथ थी 14 to 16% रहेगी इस फाइनेंशियल ईयर के लिए, और वो अपनी जो एफर्ट्स भी पूरी कर रहे हैं डिपॉजिट्स को ट्रैक करने के लिए। जो इसमें है इंडियन शुगर मिल एसोसिएशन, उन्होंने कहा कि वो एक्सटेंड करेगी जो लिमिट है शुगर एक्सपोर्ट्स को 2 से 4 मिलियन टन तक, जो कि 2022-23 के रहेगी सीजन में। सो ये जो मूव रहेगा तो उसमें टोटल एक्सपोर्ट जो 8 से 10 मिलियन टन का जो बिलो लास्ट ईयर लेवल के नीचे रहेगा। सो इंडिया देखा जाए तो वर्ल्ड का बिगेस्ट शुगर प्रोड्यूसर हो गया ब्राजील के बाद, और एक्सपोर्ट उन्होंने अप्रोक्सीमेटली 11 मिलियन टन तक किया गया अक्टूबर से सितंबर सीजन में 21-22 में। फिर इसके बाद देखा जाए तो अभी एक्सचेंज ने कहा है कि जो T+1 स्टॉक्स है वो अभी FNO स्टॉक्स में भी लगने वाले हैं, Jan 23 से ये होने वाला है, और डेरिवेटिव्स की जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो भी जो स्टॉक्स है उसको भी ट्रेड साइकिल T+1 में कर दिया गया है। इसके बाद हम देखेंगे एजी इंफ्रा को एक अवार्ड मिला है, रिसीव किया लेटर को अडानी रोड ट्रांसपोर्ट से रिगार्डिंग डिक्लेरेशन। इन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में ये मिला है
और ये कंपनी एग्जीक्यूट करेगी सिविल एसोसिएटेड वर्क्स और इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन बेसिस के लिए, और ये 6 लेन रोड बनेगी उत्तर प्रदेश में, और ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा 820 डेज में जब से इनको अपॉइंट किया गया है। कंपनी बायोकॉन ने कहा कि कंपनी एक एंटर करी सेमी एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप जो कि यूरोपियन फार्मा कंपनी जेनेटिवा है, और ये बेसिकली कमर्शियलाइजेशन कर रही है अपने वर्टिकली इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्मुलेशन लिराग्युटेड और एक ड्रग है कॉम्बिनेशन के साथ जो कि टाइप 2 डायबिटीज और ओबेसिटी को ट्रीटमेंट करने वाली। कंपनी ने उसके लिए अपने कमर्शियल पेपर्स भी इश्यूज किए हैं 2250 करोड़ के आसपास के प्राइवेट प्लेसिंग बेसिस पे इशू किए हैं 7% के बैंक के। टीएमबी बैंक है जो कि तमिलनाडु मार्केटिंग बैंक है, उन्होंने एक एंटर किया है कॉर्पोरेट एजेंसी एग्रीमेंट जो कि चोला एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी और मैक्स लाइफ इंश्योरेंस है, इनकी जो मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन और सेलिंग ऑफ लाइफ और इंश्योरेंस प्रोसेस बेसिकली क्रॉस सेल करेंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज जो रिलायंस जो है टेलीकॉम आर्म जो उन्होंने कहा कि वो अपनी 5G सर्विसेज पुणे में भी लॉन्च कर रहे हैं। हाँ, अडानी एंटरप्राइज अडानी पावर टाटा पावर का जो सुप्रीम कोर्ट ने केस एप्टेल का जो अपील किया है 7000 करोड़ के लिए ट्रांसमिशन कॉन्ट्रैक्ट जो अवार्ड किया था एमईआरसी से अडानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई को, और टाटा पावर ने उसे चैलेंज किया था 2021 के, तो ओवरऑल एक नेगेटिव न्यूज लेके अडानी पावर के लिए। आईटीसी होटल ने कहा कि उन्होंने एक पार्टनर किया जॉली हॉस्पिटैलिटी के लिए जो कि 116 रूम का होटल है बेलगावी होटल बेलगावी में है, और ये मोर देन 5 एकर्स के ऊपर स्प्रेड है होटल, और ये प्रॉपर्टी लोकेटेड देखा जाए तो पुणे बेंगलुरु हाईवे के पास है 10 किलोमीटर अवे। सो वैसे ही एक अच्छा टूरिस्ट स्पॉट है वहाँ पे। सो एक करंटली हमारी इसकी होल्ड रेटिंग है विद द टारगेट प्राइस ऑफ 3 केवीआईटी ने कल यस्टरडे अनाउंस किया है कि उन्हें सिलेक्ट किया गया है रेनॉल्ट ग्रुप से उनकी जो सॉफ्टवेयर स्केलिंग पार्टनर के लिए केपीटीआई डिप्लॉय करेगी अपनी 600 इंजीनियर जो कि ग्लोबली डेवलप करेंगे सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल के लिए टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म जो हेल्प करेगी रेनॉल्ट को अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोडक्शन प्रोग्राम के जो कि स्टार्ट होगा 2026 से। सो ओवरऑल एक पॉजिटिव डेवलपमेंट रहेगी केपीआईटी से। रेलवे स्टॉक्स पे देखा जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने कहा है कि एज उनकी जो एनर्जी कॉरिडोर पार्ट है और उन्होंने एक सैंक्शन की अमाउंट जो कि 94,153 करोड़ है, इसमें प्लान इंक्लूड किया न्यू रेलवे लाइन जो कि पोर्ट्स टू कोल माइंस लेगी एज वेल एज डिफरेंट पोर्ट्स को भी वो कनेक्ट करना चाहता है। सो जैसे हमने कॉन्कोर की बात की थी इसमें सबसे मेजर बेनिफिशियरी कॉन्कोर है और बाकी रेलवे स्टॉक्स भी रहेंगे। सो ओवरऑल एक हमारी इसके ऊपर बाई रेटिंग है राइट्स आरबीएनएल जैसे कौन से स्टॉक्स पे करंटली हमें इसके ऊपर बाई रेटिंग है। So that's it from my end. Thank you everyone for attending the morning call. You may now disconnect.